So good evening, students. So today we will cover, if possible, about three topics, but certainly we will try to do two topics today. One is the free trade agreement, which was concluded yesterday in England, where our Prime Minister has gone. It's a historic trade agreement. Though I had taken a class earlier, trade agreement, but what I have done, I have tried to give a little more content to that. Okay. Now, this is definitely going to be a question both in your prelims, your main examination, with increasing depth, and also in your interview. So therefore, let's do this for second thing would be Viksit Odisha. Again, the Prime Minister has come and they have released a document. The soft copy is not available. I'll share it with you. I got it yesterday. So Viksit Odisha in 2036. Why 2036? Because Odisha became a state in 1936. So centenary year of Odisha, and also Odisha in 2047. So this we will do in some kind of depth. Okay. Now, if after these two time permits, we will also go into a very major report by the World Bank on poverty. The World Bank has released a report where it says that India has eliminated extreme poverty. So, so this is the statement which has come from the World Bank report. So on that, there are a lot of debates. Some people say, no, this is not a sustainable argument. This is not a valid argument. So as I keep on telling all of you that we will look into the data, we'll look into the facts, and then make an assessment. As civil servants, you have no ideology. You have no party allegiance. You have only allegiance to facts. And based on the facts, you have to take a decision. So this is how we will go through. So before we come to the FTA, just keep a note, all of you. Before we come to the free trade agreement, let's look at the global trade architecture. Prithvira, trade architecture ta kaun? Mane, how exactly trade takes place between different countries? Which are the institutions which control, monitor trade disputes? So we should have a clear idea about that. So quickly go through that. Now, all of you please remember that after the Second World War, three important institutions were set up. Okay. So the first institution was UNO. Just note correctly, UNO. That was for peace. Because after two world wars, every country believed that there should be an institution which should promote peace. Conflict hochi, Israel Hamas conflict hochi, Iran sangare US conflict hochi. So whenever there is a conflict, so after Second World War, they thought that it is the UN which will be the agency which will promote peace. The second organization was International Monetary Fund. International Monetary Fund ra main kama hala how to maintain exchange rate stability. A institutional details what's the job of the International Monetary Fund? Exchange rate stability. So that countries do not devalue their currency as they like. So rupee is about 86 rupees is about $1. No. So that is the job of the International Monetary Fund. And the World Bank job hala development funding.
जो country development funding, any funding which is required for 15 years. Please note down, 15 years. 15 years. Are you all getting me? It is a medium-term loan. It is not a short-term loan. It is a medium-term loan for about 15 years. So road you want to have a national highway so loan World Bank. Now these are the three institutions which happened in 1944. Now in 1948, please note down, the GATT arrangement came. General Agreement on Trade and Tariff. General Agreement, please note down, General Agreement on Trade and Tariff. GATT, GATT. This was set up in 1948. GATT's main objective is free trade of goods. Please note down, free trade of goods between countries. Free trade of goods between countries. There should be no tariff. Goods should move freely. That's the objective of GATT. Okay. I'm deeply overall I'm बुझे चेष्टा करछे GATT. तापरे एटा माने एटा काहे कि हला, please note down, जे because it was realized जे काहे कि माने free trade हबो, because trade is considered to be an engine of growth. Please note down, trade is considered to be what? An engine of growth. Trade is an engine of growth. आमे कहबा जे आमे कोन व्हाट इज द नेसेसिटी, आम कंट्री तो जथेष्ट खाया को अछि, आम तो जथेष्ट फैक्ट्री अछि, आम तो जथेष्ट गोळा बार्द अछि, आमे काहे कि why should I trade with others? So please remember, because of trade, on an average, countries' economic growth has increased by almost 33%. Please note down, average increase. Please note down, average increase in the prosperity of a country has increased by how much? 33%. Jodi hame trade no karthante, jodi hame trade no karthante, that's a good example. In the year 2024, please note down, in the year 2024, global wealth, global GDP was around $60 trillion. Kete thila? $60 trillion thila. So, because of trade, it increased to $90 trillion. Because countries traded with each other, are you all getting me? So from 60 billion without trade, it increased to about 90 billion with trade. The reason is that tomorrow comparative advantage jodi achi. If you have comparative advantage, your comparative advantage theory, David Ricardo, but a more bada economist, 1817, please note down, 1817 re, David Ricardo, 1817 re, the comparative advantage theory likhthila. Jimti amara Adam Smith, wealth of nation re free market kotha kahithila. You note karo. 1776 re, Adam Smith kahithila, the free market jodi karibo, countries will become prosperous. Have you understood? Adam Smith's basic concept hala, the free market rakhilo, if there is a freedom between buyers and sellers, there will be prosperity for everybody. Ricardo was a student. Ricardo said, sir, I agree with you. But he said our prosperity will further increase if we indulge in free trade. Are you all getting me? It's a classical theory. What classical theory? The free market will increase your prosperity because buyers and sellers are free. Ricardo said that if there is free trade between countries, your prosperity will increase. Because of comparative advantage. Comparative advantage kono?
से कहले जे से गोटे एग्जांपल देले हमर पोर्चुगल प्लीज नोट डाउन he gave the example of Portugal. Portugal had a comparative advantage in making wine. Portugal ro wine बहुत cheap. There are a lot of grapes, grape vineyards. UK was very good in cotton textiles. Please note down. See, try to understand this comparative advantage concept account कितना आल्ला. See, कहार comparative advantage अछि? Portugal रो comparative advantage अछि in making wine over UK. And UK रो comparative advantage अछि कहाँ ऊपरे? Poland ऊपरे in manufacturing cotton. सिकला जदि ए दीटा देश if UK imports wine and Portugal imports cotton, it would be a win situation for both. Have you understood? It would be a win-win situation for both. If you are very good in making wheat, America is very good in producing computers. So it is a win-win situation for India to export agricultural products. Please note down agricultural products. This issue is FTA जो कथा agriculture products सला dairy products सला ये उड़ा करे India रा advantage रोची comparative advantage रोची आउ developed country मान करो तेरो सेठी में typical जितना हमारा trade agreement होची सेमाने चाहे manufactured products को किंतु हमारा tariff न हो. Please note down between a developed country and a developing country, developed country चाहे जो तारो जो industrial products engineering goods seem to developing country go asiva without tariff. Please note this is very important. Are you all getting me or not? I am coming to the context now. Say Portugal context Portugal say 19th century katha. Presently, why Mr. Modi is discussing with a stammer, the UK Prime Minister, on a free trade agreement. UK देखुची जदि इंडिया संगे agreement करिवो, please note down the products which will come to India. So most of the auto parts, car parts. They are interested in sending car parts. They are interested in sending scotch to India. Portugal 50% आपरे tariff होची. तमें the British scotch, the British scotch में पियो, ताले 150% लगुची. 100 टंका बोतल रे 150% लागुची. So first thing cheers कला स्टमर कला का से मोदी संगे से कला because of you my voters in Scotland will be very happy. When I say बुझ तो the wine which was attracting 150% will now attract 75%. It will further go down to 40%. So he said cheers to Modi. This is cheers not from England. This is cheers from Scotland. Scotland. So we had the choicest Scotch and wine. बहुत सस्ता अबे भाभी बना नहीं इतने सस्ते रे वीडियो बोली बुझ पड़ता ना जो स्कॉच थी तब तो स्कॉच पर 3 होची 200 टका पधार गोटे पेग होची कि 300 टका पेग होची 100 टंका साला जेठी 1/3. My wife would takes only 1 peg to 2 pegs. Kai इतने सस्ता किंतु से 100 टका रे 150% लग गला केताला 350 ऐसे गला बुझ पड़ता कथा तो. So he said cheers to that. He said, Mr. Modi, you are helping my farmers in Scotland, my distilleries in Scotland. You are also industries in auto industries in England, Manchester. So win-win situation, comparative advantage. Have you understood this thing, whole thing? Amar Modi sir ना हमें सर जुत्ता टा हमको बहुत टैक्स पड़ुची लेदर प्रोडक्ट्स हमारे सब देखिए कि को सो कंपैरेटिव एडवांटेज प्लीज नोट डाउन कंपैरेटिव एडवांटेज यदि कंपैरेटिव एडवांटेज थिबो किंतु सेते गोटे टैरिफ बसी गला तार से कंपैरेटिव एडवांटेज रही बनी
Have you understood now? If there is a tariff, then comparative advantage to rahegi. So shulko basyo habo ki nahi. So anyway, so now let us. So trade is an engine of growth, and so 48 re quickly let us go. 48 re has a free trade of goods. 1995 re, please note down. 1995 re World Trade Organization hala. World Trade Organization re the scope was increased to services. खाली goods नहीं services. और गोटे main कथा ला IPR, intellectual property rights. हला बुझी पड़ो. So बुझी पड़ो ना नहीं. So it हला WTO हला. तब WTO advantage हला जी it was an effective dispute resolution mechanism. जहाँ झगड़ा होता सेटा they could be resolved easily in the World Trade Organizations. Because there has to be the institution. जिनका हमारा court अच्छी, high court अच्छी, supreme court अच्छी. Where do we go if there is a trade dispute? So it will go to the WTO. Are you all getting me? Now, please note down. हमारा जो trade होता 1995 रो, the whole ethos was multilateralism. Please note down multilateralism and most favored nation. Multilateralism माने समस्तंका संगरे समस्तंका संपर्क रहेगा. बुझी पड़ो तो? Each one should have relationship. एटो कामे कहोचे multilateralism. Please note down. तार opposite हला bilateralism. जो तरह हमें कहे जे हमारा संपर्क हो हमारा दिजन का संपर्क हो. गोटाला किंतु WTO's basic purpose है जे multilateralism and every country सेटा काम कोचे MFN most favored nation clause है so most favored nation treatment है जो कथा है एटा गोटा मार खाइला माने the spirit of free trade was attacked during the pandemic. Please note down. From 1995 till 2019, by and large, the world believed in multilateralism. Are you all getting me? Don't get swayed by 100 answers. By and large, everybody agreed that free trade is good and multilateralism also good. अरे हमें एमती एक संगे कथा माने so bilateralism was not the preferred option. The preferred option is world is not divided by walls. Okay. COVID-19 re gote protectionism asla. Samaste nationalism asla, and everybody wanted to protect their interest, and there was also a thrust for bilateral trade. Please note down. By 2024, 600 FTAs have been concluded. Again, a very important date. 600 FTAs have since been concluded between different countries. Okay, because everybody wants to take advantage of global value chain. Is that clear to all of you? Context clear, huh? आमे बर्तमान देखिबा हला ए जो एफटीए हमरो यूके संगे हला तार कोन implication and that implication for European Union and also USA. कारण USA संगे हमरो the FTA हमारा बसची, and so now let us see in the कहीं कि मार तुमको एटा पहुंची. This is a very important milestone. एटा गोटा framework रहला. अन्य country मान का संगे discussion पाई एटा गोटे इंडिया रो फ्रेमवर्क रहला. कोटे सब मन रख प्लीज let me note करो. So it's very important. No country today wants to have a trade deficit. Please note down. एटा गोटे underlying message. कौन सी देश चाहुनी बुझले कि दीपक जे गोटे ट्रेड डेफिसिट रहो माने एटा स्टार्ट के कला यूएसए स्टार्ट कला. कारण यूएसए देखुची तारा बहुत ट्रेड डेफिसिट रहउची. So से देखुची तार मेजर कारण हला कि China is exporting most of the manufactured products.
आमे सिना ट्रम्प टाको माने पागल बोली कहूचे ताटो बुझे लोग के नहीं से कहूचे आमे मैन्युफैक्चरिंग आमे अमेरिकन नौकरी आमे चाइनीज लोगों को कहीं कि आमे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आउचु बुझी पड़छो तो मोर एबे भी मने अछि जेतेबेले आमे मु सुकोई 30 एयरक्राफ्ट जे कंक्लूजन पे 2006 रे जेतेबेले आमे रशिया गलु सेटो से माने कोन कहले से कहले जे आज गोटे बड़ सेलिब्रेशन अछि अबर आप मन सब आसी आमे सब चेयरमैन फे मिसिगिरी गोटे गां को गलु इतनी सुंदर नाच फाच कले बेस्ट वाइन सब इमला सेठू तांकर जे फैक्ट्री जे मालिक से जो सुकोई थेटर जे मालिक से तार एंड रे ही सेड जे वी आर मेकिंग दिस सेलिब्रेशन इन अ विलेज कना ए विलेज रे सुकोई थेटर मेन फैक्ट्री अछि आ ए विलेज रा 5000 लोगों को आपण 10 वर्ष में काम देले तो बुझना नहीं भारत रे 5000 लोगों काम न दे रशिया रे गोटा रिमोट विलेज रे हमें 5000 लोगों को फॉर 10 years we are giving them work 10 years 15 years you have given them work are you all getting me so Trump is also saying je mo kahe ki more manufacturing kahe ki China karibo let me manufacture but the please note down सब country जहार trade deficit होची से माने चाहू चंती तो deficit टा केमते कम होबो please note down in the context of UK and India also UK is in trade deficit please note down country ये हला ते नोट करो तो एतो जदी ए क्रुशियल कथा मन रखियो ताने ठीक UK trade deficit होची इंडिया अगेंस्ट US रो ट्रेड डेफिसिट अछि vis-a-vis इंडिया ट्रेड माने ट्रेड डेफिसिट अन्य मन को देश होची माने वी आर ट्रेड सरप्लस we are in an advantageous position vis-a-vis China vis-a-vis UK and USA but we have a very disadvantaged position vis-a-vis China तो हमें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कथा बुझिया ए तीनटा कंट्री कोन तार एप्लीकेशन अछि बुझिया बुझ पड़ो तो कथा so when you are trying to look at UK Indo-UK free trade agreement we must also understand but the most important issue hala the प्रत्येक country is trying to reduce their deficit बुझो तो था at the same time when there are agreements होची से देखो मोर किछ फायदा होची दरा इंडिया बर्तन we have a trade surplus vis-a-vis UK तो इंडिया को मोर ताले फायदा कोन मतलब वो ट्रेड टा बढ़िबो ट्रेड वॉल्यूम टा बढ़िबो अरे वेटी में पॉइंट सो जे लॉस रे अछि से कोची बो डेफिसिट किन कम होबो आ जे सरप्लस रे अछि से देखुची जे मोर केमती लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट टा बढ़िबो प्लीज नोट डाउन जे सरप्लस रे अछि से कहबो जे मु तो कंसेशन देले मोर एक्सपोर्ट टा लॉन्ग टर्म खराब होबन तो आई हैव टू लुक एट द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बुझो तो आर यू ऑल गेटिंग मी और नॉट so एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट so now let us see balance of trade India export करूची माने exports from UK is how much please note down this figure 17 billion pounds please note down a figure के मन रखियो broadly 17 billion pound के करूची export करूची UK आमे केते करूचे आमे UK केते होचे 25.5 billion so we are surplus by around 8 billion pounds 8 billion pound गोटे बिलियन हला 10,000 कोटी तने 80,000 कोटी हमरो सरप्लस होची तमे गोटे कॉन्टेक्स्ट बुझो गोटे बिलियन पाउंड हला अबाउट 10,000 crores 86 टंका हला डॉलर 100 टंका हला पाउंड बुझो तो तमे डायमेंशन ता बुझियो चेष्टा कर 80,000 कोटी टंका रा हमें ट्रेड सरप्लस होची का संगरे यूके से now so what is the situation now please note down what is the impact of the agreement कौन कौन हला तुम्हें नोट करो फर्स्ट कथा हला 99% of exports to UK will now be duty free please note these are the figures you have to एटा तमरो ना तमरो इथरे हिंदू रे आछि ना अदर पेपर आछि एटा केवल बिजनेस स्टैंडर्ड रे या डिटेल्स अछि सिथमे तुमको बुझबो छ तो तमे नहले कोन खाली ऊपर खाली छवि देखिबो दारू पीवा देखिबो किंतु तारा कंटेंट तुम पाबो so 99 exports to UK is duty free and 90% in case of UK
यूके रे जो एक्सपोर्ट आसीबो वर्तमान 90% of the item would be duty free. Are you all getting me? And please note down the average weighted tariff. Please note down average weighted tariff. Average weighted tariff माने सबु tariff रे गोटे average जे नबा वर्तमान प्राय 15% थिला. That has come down to 5%. Sir, Have you understood? Have Sir? you understood? हाँ को sir, ये जो 99% exports to UK duty free इटा sir authority के बुझे दे हम. इतना सब but there are but the number of items which are now going to be duty free in export, that number of items would be about 99%. आमर जो इंडिया को जो आइटम आछी 90% आइटम should be duty free. And the implication होची, please note down implication होची जे average tariff सब मिसिकी थिला average weighted tariff थिला 15%. That has come down to around 5%. Are you all getting me? 5%. So say the historic agreement. Now let us see key benefit पाउची कौन. ये नोट करो कि कौन बेनिफिट पाउची मु कौन पाइली माने अल्टीमेटली पीयूष गोयल को मोदी पचारिबे अरे कौन तू कलु खाली दारू पिउचु स्कॉच पिउचु ना किछि चॉकलेट खाउचु ना किछि करलु कौन सर पाइलु कौन कलु सेठ से कहबो सर बेनिफिट टू यूके. प्लीज नोट बर्तन खुशी होची कौन यूके जे व्हिस्की रे 150% ru 75% komila immediately. Please note down. And from next year, it will be 40%. Please note down. Whiskey will become cheaper. Okay. तो मात्रा जो जदी OAS plus 5 टिके whiskey पियो बुझलगी UK और whiskey पियो हला. Please note down. So किए happy होचंती distillers in Scotland. सेन बड़ा खुशी बड़ा से ताली होचंती. Auto parts, please note down. This is very important. Auto parts. So Deepak सबले ताको data वाला दो. Auto parts, 110% to 10%. Now this is the most significant reduction India has given to UK. Now European Union is also asking for the same. Please note down. Auto parts, car parts will become very cheap. From 110%, it will now come down to 10%. Okay. Electrical machinery from 22%, it would become 0. Aerospace product, 0%. Tapare soft drinks and chocolates, they duty nahi. कौन concession पाइले से मने को तुम्हें? Whiskey हला, auto parts हला, और कौन? Aerospace हला, chocolates हला, ऐसो हला. बुझी वाला तो सब. Medical devices. All things are excluded. Please note down. Now we have to see what are the items excluded. Say 1% कौन excluded. So please note down. This is very important. तमे आंसर दे एति खाली दबो तुमको 6 मार्क मिलियो किंतु ता संगे ए लाइन टा जोड़ी देले तमरे 8 मार्क हो. अरे आर यू फॉलोइंग मी? कौन तमे एक्स्ट्रा कहूचो समस्त तो बलबल लगी से कहिला ऑटो पार्ट्स कह दे जेमिति कर देला सब तमे सब संग संग कहि देला सब ऑटो पार्ट कहि देला समस्त जानचंती तले तमे कोन नुवा कथा कहिला कहबे मास्टर कोन नुवा कथा कहले मास्टर टी कहले टी कौन एक्सक्लूडेड देखो. प्लीज नोट डाउन. डेयरी प्रोडक्ट्स, okay, apples माने ए गुडा जिनिस रे इंडिया इज नॉट मेकिंग इट ड्यूटी फ्री. जहां ड्यूटी थला प्लीज नोट डाउन. Duties on dairy products, apples, cheese, gold bars, and smartphones. Please note down. Very important. It is note करो. कौन इंसा excluded? 1% जोड़ा मैं कहूँ चे. That 1% in value terms is around 10%. बुझे तो? See the percentage पचाला 99% not in value, in number of items. Please remember, it is not in terms of value. It is in terms of number of items. A 1% कौन हला? जी Apple, UK Apple, America Apple, 80 ड्यूटी पड़ेगा. नहाले तुम्हारे हिमाचल प्रदेश और कश्मीर जो Apple अच्छी जहाँ बिक्री खबर है. Okay.
So cheese, gold bars and smartphone. Now what is the message India is giving? Please note down. The message India is giving is that we want to protect, please note down, we want to protect our farmers and encourage, please note down, and encourage domestic production of smartphones. Are you all getting me or not? First hela ame protect karibu kahaku, amara farmers manku, our dairy sector taku. We also want to encourage production of smartphones. कारण तमरो आईफोन रे वर्तमान बहुत भलो प्रोडक्शन होची कोठी बैंगलोर रे होची जोठो अमेरिका को जाउची सो आमे सेटा को प्रोटेक्ट करछे सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन आर यू ऑल गेटिंग मी जो का हमरो इंटरेस्ट वुड बी अफेक्टेड सेठी हमें करू ना ओके नाउ लेट अस सी what is the benefit ये जो 90% का what is the benefit to India textile please note down textile toys leather footwear gems and jewelry एथरे almost tariff नहीं बुझलो तो कौन हला textile toys leather goods footwear gems and ये होची traditional exports of India to developed countries please note down Gujarat is a major place for gems and jewelry. Acha, what UK is excluding? What UK is excluding? Please see. UK is excluding from export rice, meat, sugar, and eggs, and also electric vehicles. Please note down electric vehicles. Electric vehicles are not getting the benefit of tariff reduction. Now, please note down, USA is looking for the same thing on electronic vehicles. We have to see how India is going to respond to electronic vehicles. Are you all getting me? Bilateral trade will double by 2030. Please note down, bilateral trade will go up by 2030. So as I said, USA is also looking for duty concession kotre electronic vehicles. Please note down petrochemical products, apples. Please note down, and most importantly on genetically modified crops. Please note down genetically modified crops. A issue ta nahi अन्य को country ra. Genetically modified crops is a standalone issue with America. जो थे हमारा इंडिया रे बहुत अगेंस्ट में एजिटेशन होची हमारे जो बना अच्छा सोशल एक्टिविस्ट लाइक बंदना सिवा दे थिंक दैट इट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय आवर एग्रीकल्चर आवर ट्रेडिशनल फूड टा कंप्लीटली ते अफेक्ट हो बुझलो तो केवल हमें जीएम रे खाली कॉटन टा बीटी कॉटन हमें अलाउ करछे किंतु फूड रे हमें पद करने जरा रमेश जत्रा मिनिस्टर चेष्टा करथले कि सेतबे सेटा हलानी सो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन सो वी हैव टू सी how India is responding to EV, note karibo EV and GM crops. Are you remember? Our in textile, gems, jewelry, garments, evoda sabu khala. Buji parto to kotha. So to sum it up, India is trying to protect its agro-based products and dairy products. India is also trying to protect the upcoming smartphone industry. At the same time, we are now allowing, please note down, auto parts to come very cheap. Auto parts, auto sector will receive very, very cheap parts and products. What is the way forward? We end with this. What is the way forward? Okay. Now, please note down, data ko asle. The total export of India, please note, total export of goods and services for India is around $821 billion. Please note down, $821 billion. Jutre goods hala 437, our services hala 383. This is very important. Goods hala kete 437, services, IT enabled services, this is 383.
आमर जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी सर्विसेज इज ए वेरी वेरी मेजर कंपोनेंट. What is the total imports? Please note down. $915 billion. Please note down. $915 billion. जो की, please note down. Goods sell are 720. Please note down. Goods sell are 720. Services sell are 195. आमे सर्विसेज कम इंपोर्ट करूचे, सर्विसेज बेसी एक्सपोर्ट करूचे. सो हमर ट्रेड डेफिसिट केते अछि? $94 billion. तेणु इंडिया कौन करियो पड़िबो? हमर मैन्युफैक्चरिंग रा एक्सपोर्ट ता बढ़िया पड़िबो. तले व्हाट इज नाउ प्लीज नोट डाउन द ट्रेंड इज दैट इंडिया's एक्सपोर्ट लास्ट ईयर went down by 7%. Please note down. And imports went up by 4%. Please note down, this is a very important trend. Our export is going down by about 7% and import is going up by almost 4%. So therefore, so we have to boost our exports. We have to protect agro and dairy products and smartphones. Please note down, we have to improve our SEZs. What is SEZ? Special Economic Zones. Our special economic zones जो थे हमें करते ले जुड़ा को China to हमें example. Please note down. We have to promote export-oriented units, and special economic zones. Special economic zones से कौन होची? It is tax free. तार profit ऊपर tax नहीं. बुझी पड़चो? Special economic zones रे there is no taxation on profit. So they get a lot of benefit. Okay. Now let us look at the three countries. Please note down. What is our export to China? Around $17 billion. Please note down, $17 billion. हमें import करूचे $102 billion, about $102 billion. So the deficit, please note down, is around $85 billion. तो देखो आमर जो टोटल जो आमर ट्रेड डेफिसिट कितने अच्छी $94 billion अच्छी same deficit with China कितने अच्छी 85. Can you see that? देखो overall context देखो out of a total deficit of $94 billion आमर major deficit अच्छी China से. Are you all getting me? Now USA को हमें एक्सपोर्ट करते कहते $86 billion. Please note down, $86 billion. Import करते $41 billion. So we are surplus by $45 billion. मने पड़ची जिमती UK संगे हमारा ट्रेड सरप्लस होची. So similarly with USA हमारा ट्रेड सरप्लस होची. So what is the objective of Mr. Trump? जे आमको किमिति बेसी जिंस बिकिबे. Please note down how export from USA increases. Eita hochi tankara main thrust. His interest is not for increasing export from India. His objective is how to कि कौन टा मोदी साहब कौन हुआ जिनस नेबे आउ नेबे की 5th generation fighter aircraft नेबे की एबे गोटे अपाची हेलिकॉप्टर आसी पहुंची अपाची हेलिकॉप्टर पहुंची से हेलिकॉप्टर सब पहुंच जाउची से फाइटर हेलिकॉप्टर पहुंची से कुछ कौन हुआ जिनस नेबे आप कोंतु से तंक 5 मिनट कथा हबो से खाली क्या लेंगे आप मोदी साहब क्या लेंगे कुछ ले रहा है ना नहीं ऐसे फालतू चाय फाय वेस्ट कर रहे हो से कहे नहीं सर हमें इटा नबो हम करियो so basically they want to हला. So now the point is जे आमे काहे की so we are critically dependent on China for critical inputs and material. Please note down आमे China संगरे most of the critical inputs and materials संगरे आमे याडे कहूचे मैं टिकटॉक बंद कर दवा आमे चाइना को अब चाइना रे वो किछ करिबानी किंतु इंटरनली प्लीज रिमेंबर ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट से मोदी कहते सर जा करंतु से ताकू ता संगरे लागंतु नाही कारण तांको तो क्रिटिकल इनपुट्स आसुची एबे कहउचंती मैग्नेट्स जो मैग्नेट्स दरकार फॉर द कार्स दरकार से कहउची नाही नाही आमे चाइना रो नबानी समस्त कहउची अगस्त सुधा हमर स्टॉक सही जीवो से कहउनी आमे सब प्रोड्यूस करते लोकली कोन प्रोड्यूस करते बायगण भरता हिचे बायगण भरता कर दो संगे संगे बायगण फ्राई करी भरता कर दो संगे संगे. So it takes 3 to 4 years for developing. Please note down. Got an indigenous product develop kariya pe. If you want to develop an indigenous product,
The average time is about 3 to 4 years. It takes quite some time, quite some time. More mane ache ame etale aircraft air parts ame etale koruthulu substitution koruthulu HL pai, took us about 4 to 5 years to indigenize those parts. Jadio apakhre design drawing thila, it takes time to produce them. Now, there is a very interesting article today, please note down, in the article today in the Hindu, very interesting article. Se koche age of free tariff jo kardale of chocolates and spirits. So, pilla bada khai ki jaso mota hi je. Mane jo foreign FTA ro gote consequence hochi je bharatiya pilla mane aw SN Mishra सब बहुत हारी मोटा है. Chocolate खाइबे, क्रीम बिस्किट खाइबे, whiskey पीबे, एवढा खाइगिरी सबु high fat and sugar. So therefore the article says there is a need to strengthen, please note down, regulatory practices. तामने आमे इसे product रे पूरा लिखिबा जे नाने याकू खाइले आपण 5 किलो बढ़िबे, आपण को डायबिटीज इतले हरी बहुत असुविधा हबो, हॉस्पिटल बहुत जीवा पड़िबो, बुझले कि? So एटा होची कथा. So you please read that very interesting article which has come in the Hindu today. So this is so now let us see China konta koruchi jyoti pai etti ta upare byasto sub hochu bujlo ki China kahinki why it is the number 1 MB. Now let us see very quickly, just take a snap of this very important slide which I have made. What are the lessons we have to take from China? On one hand, we can say it is not a democratic country, it is not a communist country, it is an autocratic country. So, India is a democracy. So, all this argument is in that place. Please note down that in 2012, please note down that China is independent 1950. So, the thrust was, please note down, the thrust was low value, labor intensive exports. Low value, labor intensive export. Because China realized that there technology nahi, jo tariki se computer bane paribo. Ye high technology items pade. So their strategy was, tankar jo export strategy hala, je let us produce a large number of low value, labor intensive manufacturing products. छोट पार्ट्स बनेगा तर गोटे जो मोबाइल रो जो हार्ट टा अछि ताइवान रे जापान रे बनौछि किंतु तार बाकी जो पार्ट्स सब चाइना रे बनौछि but the heart of the system is made by so China करे जे नाही हम तो नाही हो किंतु 2012 please note down in 2012 they have changed their strategy. कौन strategy कले? So they prioritize sectors like aerospace, please note down, semiconductor, clean energy, and biotechnology. So देखिले जे ए sector गुड़ा का गले, आमे अगर US संगरे compete करते हैं. Are you all getting me? What are the sectors? Aerospace, semiconductor, clean energy, and biotechnology. So 60% of rare earth processing and 40% of the world's bulk drug is supplied by China, and 92% of rare earth supply. जो rare earth बाली सब अच्छी, बहुत बाली अच्छी, किंतु ताको process करके magnet करी वाला facility हमारा नहीं. Are you all getting me? कि कुछ boyfriend बोल बारह चिकी. So हला. So therefore माने आमर जो की इंपोर्ट्स माने हमें धरा जो एप्पल होची चाइना रा सब मोस्ट इंपोर्टेंट अछि सेते को होची ना दे हैव अ वेरी रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड सप्लाई चेन. सो दैट इज हाउ चाइना हैज बिकम माने ए जो माने बेसिकली दे हैव मूव्ड इनटू स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स एंड दे हैव इन्वेस्टेड वेरी हैंडसमली ऑन ऑल दिस एंड देयरफॉर they have also invested in technology transfer, critical design capability, and they have made aircraft like J-10C. माने एक एयरक्राफ्ट का गोटा टेक्नोलॉजी so तीनटा कथा गोटा ला क्रिटिकल एरियाज रे से माने इन्वेस्ट करचंती
our critical design technology re semane karikiri they are able to sell advanced products. These are the lessons that we need to take. We need to take from China. So we come to the second issue, which is called Bujiparo Sabo. Free trade agreement Bujiparo to? Okay. They have deficit in the services. Services they are services sector IT they are not as good as India, but manufacturing high value and manufacturing so they are number one. In fact, USA is very wary of China because of this. Okay. So now we come to Viksit Odisha. Amar jo Odisha jo bahut husto-pusto Odisha achi tamar so jo husto-pusto Odisha habo sabu mane kon ta habo mane ei jo Viksit word please note down, that means we want to transform from a developing state to a developed state. When somebody asks you Viksit Odisha mane kon, Viksit India mane kon, we want to move from what? From a developing state to a developed state. Okay. So, Ami dekhiva, where Odisha actually stand. Ami dekhiva, before we come to the targets. So let's, officer, we must know the position. Within India, Kerala model. Please note down Kerala model. Amartya Sen model. Please note down. Question what is Amartya Sen model? Amartya Sen model believes in human development. Please note down. Amartya Sen model believes in what? Human capability development. More investment for education, more investment for skill, more education investment for healthcare. Just to give an example, 5% of GDP, please note down 5% of GDP, we are spending on education and health. Most of the developed countries spend around 10%. So therefore, this is what we call. Amartya Sen model ta development model, human development model. Gotala growth. जो थ्री हमें कहूचे हमर जीडीपी बढ़िबो हमर एक्सपोर्ट बढ़िबो फॉरेन एक्सचेंज बढ़िबो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ग्रोथ डेवलपमेंट कोठियाला हमर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर हबो क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल्स बेटर हबो हमर स्किलिंग बेटर हबो एटा कमे डेवलपमेंट कोचे सो इन इंडिया प्लीज नोट डाउन देयर आर टू मॉडल्स one is called the free market model of Jagdish Bhagwati. Please note down, this is called Jagdish Bhagwati model based on free market. Semane kochundi market ko free karo. So it is basically believing in capitalist model. It is a capitalist model. So seita hochi Gujarat. Gujarat ro entire the philosophy of growth is based on the Bhagwati model. Are you all getting me? Onek samare IAS re question aschi, please compare Bhagwati model with Amartya Sen model. Setar tame akash kon sara Bhagwati ki Sen ki sare oda na सब Adam Smith, Milton Friedman, Fred von Hayek तीनटा लोक ना लेखो बापा हले ग्रैंडफादर हले की Adam Smith तांकर पुआ फ्रेडरिक वॉन हायक तांकर ग्रैंडसन हला मिल्टन फ्रेडमैन प्लीज नोट 8 आउचंदे हमें फ्री मार्केट मॉडल के स्मिथ तापर मिल्टन फ्रेडमैन इन द 70s एंड तापर कोन नाटक कहली तापर फ्रेडरिक वॉन हायक होची 50s रे ये हला 1776 गोटा हला 18th सेंचुरी गोटे तार पुआ हला हायक फ्रेडरिक वॉन हायक ऑस्ट्रियन इकोनॉमी से होची 1950s रो आउ तापर 1970s हला मिल्टन फ्रेडमैन सो ए माने सब बिलीव करंती यदि फ्री मार्केट हबो कंट्री विल बिकम प्रॉस्परस a rising tide please note down they believe that rising tide please note down a rising tide will lift all boats a rising tide please note down will lift all the boats a rising tide will lift all the boats
जदि तमरो ग्रोथ ता बढ़िबो ताने समस्त सेतरे बेनिफिटेड हेबे एटा कहंती हमें कोन कहंती एटा कहंती जो कहंती ट्रिकल डाउन थ्योरी प्लीज नोट डाउन व्हाट इज ट्रिकल डाउन ट्रिकल डाउन थ्योरी हला राइजिंग टाइड विल लिफ्ट ऑल बोट्स तो टैप टे खोली देले पानी सबडे हबो से कोन कहबो जे ना एसएन मिश्रा घर को जानी भी कहबो कि से को सबडे जीवो से पानी तुमको पानी को so trickle that's called trickle down theory that is called the growth theory एटा मिल्टन फ्रेडमैन नो एटा की कहितला तुम कहितला सब तुम किछि मन रखो ना किछो मन रखो ना सब की कहितला सब कहलो से गोटे नोबेल लॉरिएट ठीक मने पड़नी मोर मने पड़नी कहि तुमको so anyway so गोटे हला ग्रोथ थ्योरी फ्री मार्केट थ्योरी आउ गोटे हला डेवलपमेंट थ्योरी it is basically a left ideology please note down left ideology गोटे right ideology गोटे capitalist ideology आउ गोटे हला तमरा socialist ideology so we will see आमे गोटे please note down आमे जो SDG गोटे हम नीति आयोग आते खोलिबो कंप्यूटर देखिबो गोटे तकर डैशबोर्ड अछि से डैशबोर्ड रे they are saying how each country each state is performing as per the SDG targets. There are 17 targets. Against each of the target, how each state is performing. Are you all getting me? This is very important. So whenever we want to make a comparison, I mean, our state bhalo karuchi na karuchi. So we have to see what do we need to see? We need to see the SDG dashboard. So we'll see the तापर हमें देखिए कौन टारगेट अच्छी 2036 और 2047 and what are the challenges envisaged. So let's go into this. एटा टिके नोट कर समझते एटा बहुत इंपोर्टेंट आमे वर्तमान एथरे ए जो टेबल टाको टिके सुनो गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट हला ए जो टेबल रे आमे कोन एनालिसिस करते खाली डेटा नुवा what is the interpretation of the table that is what is important देखो 1 2 3 4 please note down 1 2 3 4 हला development parameters please note down 1 2 3 4 1 2 3 4 Manjusa are the development parameters and 5 and 6 are growth parameters. Whenever we are looking at any state or any country, we cannot just look at the growth parameters or the development parameters. You have to look at both of them. Are you all getting me? So now let us see how the parameters are. Pratham parameter lekha multi-dimensional poverty index. Please note down multi-dimensional poverty index. Multi-dimensional poverty index. Multi-dimensional poverty index ray, please note down education, please note down it looks at 3 parameters. The 3 parameters are education, please note down education, health and living standards. कौन education, health और living standard. तो जब क्वेश्चन पूछे MDPI, what is MDPI? MDPI measures education, health and living standards. Okay. Now, as per this, Odisha 15%, please note down, 15% are multi-dimensionally poor. Please note down. Are you all getting me? 15% loko multi-dimensionally poor. Mane deprivation in education, deprivation in living standard. Kerala is 0.55, less than 1%. Kerala is one state which is having the best score in MDPI. Amara Gujarat hochi about 11.6%. All India hochi 15%. Please note down. All India hala kete 15%. Now this is a reduction from. Please note down. This is a reduction from 26% in 2010. Please note down. In 2010 percentage, all India percentage in MDPI was 20%.
that has come to now 15%. Are you all getting me? So ei jo katha mein koche je India poverty is not removed, poverty has reduced and very substantially. This is very important. ei table re ame kon kurche gote state neche jota ki growth model chalchi ଆଉ ଗୋଟେ state ନଉଛି ଆମେ development ନଉଛି. Second matter, maternal mortality rate. That means how many women are dying during childbirth for 1 lakh. Please note down, this is very important. एवढा सब तुम मन रख, एवढा तुमरो मेन रे आसीबो, तुमर इंटरव्यू रे मध्ये तुमको एवढा सब MMR 25%, 25% रो वर्तमान 15% अछि. 25% रो वर्तमान 15% अछि, है ना? 20 भूल ले कहली 25%. Okay? Now we come to maternal mortality rate for 1 lakh. Please note down, maternal mortality rate of developed country is less than 10. ଆମର ପୃଥିବୀରେ 123 ଦେଶ ଅଛି. There are 183 countries. Please note down, କେତେ ଦେଶ ଅଛି? 183. 183 ରୁ ପ୍ରାୟ 60 ଟା ଦେଶ, about 60%, about 30%, 60 countries are considered to be developed. Are you all getting me? जोठी MMR is less than 10. Please note down. तुम तो मु developed heavy. तामने कौन करियो पड़ियो? तामने I must reduce my maternal mortality rate to less than 10%. Are you all getting me? Are you all getting me or not? Now say करे भारत माने भारत का स्कोर कितना अच्छी वर्तमान 97. Please note down, भारत का स्कोर हला 97. मेरा ओडिशा महान हला 119. तमे सब जाएंगे तहसीलदार खाली बसी दारू पी करी गप मारी करी कौन सार भल अच्छा चा टे पिलेनि कौन सार एमती कर किए मैटरनल मोर्टालिटी देख 19 से सब एम्बुलेंस रखी स्टेट एम्बुलेंस. अच्छा, इंसिडेंटली हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स as far as maternal mortality. I did a study in Himachal Pradesh. It is 12 only. सेठी से माने फोन कला माने जाके इसरा मोबाइल पहुंच पे जो ये पहुंच पर एम्बुलेंस पहुंच पे. And what they do, they track all pregnant women and तांकर फीडिंग सेटू सन 3 मास 4 मास आगु आरंभ करते. सो ये हो और गुजरात में कहते हैं 57. Now come to, please note down, IMR, infant mortality rates. These are very important parameters. Infant mortality rate per 1,000. MMR is for 1 lakh. Okay. So IMR है ना 39 है ओडिशा रे, 32 है इंडिया रे, 8 है केरल रे, 24 है गुजरात. ये नोट कर दियो माने. What do you find from this? The health care of women and children is not satisfactory in states like Odisha and Gujarat, whereas it is much better. Now we come to education. Please note down education. Gross enrollment in higher secondary. All in 57%. 85%, Odisha 43%, and Gujarat होची 48%. बुझो तो आमे बेस सुंदर भारे कंपीट करछे. मैं गुजरात संगे बहुत बढ़िया कंपेयर करछे. ओके, सो एति के हला हमरो माने नहीं जे खाली डेवलपमेंट पैरामीटर्स नहीं. तो वी कैन टेक मेनी मोर डेवलपमेंट पैरामीटर्स. दर गोटा हला माल न्यूट्रिशन अमंगस्ट चिल्ड्रन, गोटा स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन. लेखो स्टंटिंग अमंगस्ट चिल्ड्रन, स्टंटिंग अमंगस्ट चिल्ड्रन माने less height for age. 12 वर्ष छुआ तक उसका हाइट 4 फुट ही थी. less height for age, and that happens because of persistent malnutrition. Please note down, stunting happens because of 2 things. Gotala persistent malnutrition and poor sanitation. Stunting कौन कौन हबो? गोटाला
consistent malnutrition ଆଉ poor sanitation. तेणु slum रे अछि सेठी माने मैला पानी पाखापाखि चलछि, you know, your sanitation is very poor. So एटा हला पर तापर हम आसीबा growth parameters आसीबा. Please note down, this is very important. ये सब development parameters. Now please remember, note करो जे one of the reasons why IMR in developed country is also less than 10. Please note down, IMR in developed countries is less than 10. Both MMR and IMR is less than 10. Mane single digit, it is in single digit. Mane there is a tremendous concern to mori wala mane to mane television to halat kharab karta. Move first time 95 re UK oli दूरदर्शन किछि नाही जरा नाही देखला उठा बीबीसी देखला गोटे चांगरा रिपोर्ट चलै छी गोटे की गोटे छुआटे मरि जाई गोटे गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे से सब पिला से राउंड से सब कहार सब गोटे गरीब लोकर पिलाटे मु देखली टेलीविजन 6 घंटा सा ता विषय काली चलछि से रिपोर्ट अछि सेठ मु जानली जे लाइफ मैटर्स टू देम आर यू वेरी वेपन माने लाइफ मैटर्स इफ यू आर ए वीआईपी इन इंडिया लाइफ डजंट मैटर इफ यू आर ए पुअर पर्सन by and large टिके तमे तहसील पथा टिके माने टिके मन दबो तांको पक्कु टिके जे गरीब पिलेटा हाला बोली आए छाड़ ताको कोन से भइयो तो मरियला कोन आ करे खायौ पाइ दतला बोते जर हित लागले तते जर हितला हां एबे टीआरपी पढिया पे सब टीआरपी पढिया पे करछ तमे टीआरपी पढिया पे करियोनी बुझो तो हेलो तो एनीवे सो नाउ प्लीज रिमेंबर when we talk of growth we are all the time talking of growth rate. Please note down. We are all the time talking about growth rate. हमें कुछ growth rate बढ़िया. तो करचो किसी crime fame करचो कि तमें तो बहुत interested हो चित्रे. Anyway तो development parameters सब development parameters. सुना तमे गोटे मते कहलो कोठी डाटाटा मिलु जदि कहबो तुमको 100 टका देबी से जो कहूची क्राइम कथा कहूची कोन रिपोर्ट पढिले को रिपोर्ट पढिले अरे हां दसल के आ गोटे कोथरे आ गोटे सीआरबी कोटा NFHS please note down NFHS National Family and Health Survey NFHS there's a chapter on crime against women. The last chapter, first pile now last one chapter lecture crime against women how women are getting bitten by alcoholic husbands. How alcoholism is very prevalent and how crime against women is prevalent in almost all states. All states. माने एते माडो खांती स्त्री लोक गुड़ाक ये बदुआंग संगे रात्रे ताकू केही तो दबिया को नहीं तम मैंने तो आज कर रखी खड़ो रखी पिटियो धर करी किंतु तांको अवस्था बहुत खराब तम अवस्था को बहुत खराब छाड़ दो तुम से क्राइम आसे प्रथम हला डेवलपमेंट हला वर्तमान तुम हमने ग्रोथ जतरा हबो प्लीज रिमेंबर दैट डोंट गो बाय द जीडीपी ग्रोथ रेट के 9% होची 8% होची the most important indicators for growth please note down are share of manufacturing and share of services. कौन सा parameter? Share of manufacturing and share of services. Are you all getting me? भलो किरे नजर करो. All these countries, please note down China, Germany. Please note down China, Germany, Russia, South Korea, Japan, Germany. ए सबु देश गुड़ा प्लीज नोट डाउन ए सबु देश गुड़ा को तकर शेयर एक्चुअली इज 30 to 35%. प्लीज नोट डाउन. I'll repeat again. Countries like China, Germany, Japan, South Korea, and Russia, their share in manufacturing is between 30 to 35%. So they have become manufacturing hubs. And तांका जो trade surplus होची, तुम देखिए China trade surplus होची is because of manufacturing. Now see the data. What is the share of manufacturing in India? कहते, please note down.
14.3%. Tankar kete? So 30%, 0.3%. The only state where the share of manufacturing is very high is Gujarat. Please note down 35%. Aji Gujarat, because of its not only infrastructure, manufacturing as a share is 35%. Same Kerala share kitna? While they are good in the development parameters, please note down, while they are good in the development parameters, they are weak in manufacturing. अरे बुझी पड़छन नहीं एमती एनालाइज कॉलेज जायकरी खाताटा के पड़िबो नले तो कोन खाली बालबल होचे बुझी पड़छ तो so Odisha is about 24%. Odisha is about 24%. Our manufacturing share is quite good. Now let us look at services. Please note down services. Services re India share kete hela 54. Please note correctly. It's बहुत important. And what is the share of Kerala in this? 64. Why? Because number of educated person is very high. Literacy is very high. People higher secondary data. I show higher secondary data 85%. Are you all getting me? Correlation action me. So 64%. Bharat rala Odisha la 36%. Ab Gujarat la 35%. Eight table ta kimiti interpret kariba. Please, tome crime ko asar tome. So from this table, what is our conclusion? Please note down. Our conclusion hala, while states like Gujarat are doing well on the development parameters, because they are not following a free market model, the share of manufacturing is very, very low there. The share of manufacturing is very low there. Nobody wants to go and invest in Kerala. तो काम करे देवेनी हाय करिवे जिंदि बेंगल रे ममता दीदी अछती चलबे ना मानचिना मानबो ना माने ना मानिबे एबे मानिबे ना परे मानिबे मानचिना मानबो ना की जीवोसिटी इंडस्ट्री करिया पे की जीवोसिटी की are you all getting me? Investment climate is very important. So while on the development parameters Kerala is doing well, it is not doing well in manufacturing. It is doing well in services. So therefore, if you want both growth and development to happen together, the model has to be a mix of free market and development. Please note down. This is very important. The model of tomorrow jo growth model ta habo, tomorrow jo strategy habo, it has to be a mix of free market and development. It has to be a mix of both. Free market kole tomorrow ethi manufacturing habo. People will like to invest here. Tame the development mein jodi adhiya kharcho karibo tahal jaikri sethi habo. Are you all getting me? Now we come to el dekho. So these are the dekha kene sundar hoke data dekha hoche. Bujhlo to? Eura sabu tum bujhlo to? Kemti tum dekha. Children underweight children. Good khali data dekha. Kete all India kete? Punjab kete? Odisha kete? Gujarat, it is low. It is almost same as Kerala. Never apply a black brush to anybody. Look at the data. Children stunted. Here, Kerala has a better record, but it is women anemic. Please note down anemic. Percentage of women who are anemic is around 50%. Please note down 50% women are anemic. Kerala is around 22%, but still then
the figure is very low, very high. Odisha is around 47.6%. So anemia, what are the problems? Would allow underweight children, I would allow anemia. I'm asking about one industrial innovation. It's a photo. Industrial innovation. तुम देखो इंडस्ट्री रे गुजरात केते होची 36.7, कर्नाटक होची 42.5, ओडिशा केते बुझी पड़तो तो से किंतु हमारो ग्रोथ परसेंटेज इन ग्रोथ एगुडा को सब इंडस्ट्रियल इनोवेशन भल को दिस इज दी ए दीटा जो बुढ़ा अछन ना एटा को हेलानी काना बयान हेलानी याकू भी 90 हेलानी ये केते राम नाम सत्य है किसी कहि होबनी बुझे ना ए दीटा को पूरा अछती कम्पीट करचंती केते बेले कोन जिवे बोली बुझे ना सो तमे देखो एथरे सब देखो सो नाउ लेट अस टेक केरला so we find it is good in quality education. Okay, it is not as good in healthcare. It is not as good in healthcare. तुम देखो good health रे की बहुत Gujarat. Please note down. Gujarat is very good on health. ये जो थोड़ा हला जो एयर इंडिया क्रैश हला से हॉस्पिटल से सो थिले से तक कितने सुंदर भाव तक लुक आफ्टर कले नहले कोटी जगह हालत बुझी पड़तो तो सो तो गला यस मैंने कहे कोन चाहछो तमे कंप्लीट सो नाउ लेट अस सी हमर ढाला इंडिया रे कंपैरिजन हला जे पर कैपिटा इनकम एटा हला इकोनॉमिक ग्रोथ अब इकोनॉमिक ग्रोथ देखो हला इकोनॉमिक ग्रोथ ओडिशा इन कंपैरिजन टू इंडिया इन द लास्ट 10 years सो तमे देखियो ओडिशा प्लीज नोट डाउन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ वी हैव बीन डूइंग बेटर देन ऑल इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ मने पड़छ तुम कहिथिले आरंभ रे जे हमें ग्रोथ खाली देखिकरी हम हबन धर फॉर इंस्टेंस इन 16-17 please see 15% was Odisha's growth whereas growth of India was around 8% सब बेले except for 1 year but otherwise सब please note down that the GDP growth of Odisha has always been better than all India growth rate किंतु हमरो कम होची कोथे मैन्युफैक्चरिंग रे शेयर को services we are not doing well please note down we are not doing well in services कितने ऑल इंडिया सर्विसेज शेयर कितना होची 57% प्लीज नोट डाउन ऑल इंडिया सर्विसेज रा परसेंटेज कितना होची 57% ओडिशा होची 36% बुझी परछ तले नाउ लेट अस सी विकसित ओडिशा रे कोन हबो हम लास्ट डेटा स्लाइड दिबा हला नाउ दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड फॉर ऑल ऑफ यू ओके एटा फोटो लियो तमे सो हाँ पठाई देछ भाई देखो आमर वर्तमान प्लीज सी आमर जीडीपी केते अछि 100 बिलियन आम मोहन माझी सर कहउचंदी जे मो 2047 सुधा माहरी 15 गुणा हिची 2047 सेबे नै मु तो थिबी से 15 बंची थिबी कते बहुत तक हला की से को 2047 उनको 1500 बिलियन से थिले चेना लागू पचाइयो सर आप 1500 बिलियन कहउतले मिस्टेक करना तो 150 करना तो से 1500 बिलियन बोलेगा 1.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नाउ प्लीज नोट डाउन व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ विकसित ओडिशा कौन टा माने व्हाट इज द डायरेक्शन ओडिशा इज लाइकली टू टेक all of you must take a note of this is very important for all of you because you are going to work in this environment we may not achieve that kind of a target but we must see what is the direction we are taking कौन हमारा direction होची please note down जे urbanization please note down urbanization will be the engine of growth वर्तमान 30% होची urban area होची please note down and this particular Viksit Odisha program wants to double it by 2047 please note down कितने हबो
30% ରୁ 60% ହେବ. Now please note down, they are going by what is known as the Lewis model. Please note down, Arthur Lewis model. Arthur Lewis model. Arthur Lewis model. ठीक है, लिखा से Nobel Prize पाई था. Arthur Lewis model. Lewis model in the 50s, it suggested जे तमरो दी गाँ रे माने एग्रीकल्चर सेक्टर रे बहुत लोक अछंती, please move them away to manufacturing. माने basically, please write down, Lewis recommended, please note down, Lewis recommended that in a country where there is a sizable population in rural areas, where productivity is low, comma, the growth strategy should be to move people from rural areas to urban areas and engage them in manufacturing and engage them in productive manufacturing. पढ़ लो सर लाइन तक पढ़ लो. हाँ कौन लुइस पहला? हाँ तो उठिया तो करे बस को. Somewhere productivity is low, the growth strategy should be to move people from rural area to urban area and engage in manufacturing. Which is productive and not only manufacturing, productive manufacturing sector. So this model was followed by China. Please note down. Now in 1950, 70% of Chinese, they lived in the villages. By 2000, the population in the villages has come down to 40%. And population in the urban area has become 60%. Are you all following me? And saying manufacturing. It's a very simple model. But on the face of it, so that is what Mohan Majhi is going to do. Mohan Majhi, our great economist, our great tribal leader, say Vartman Sabu Kadinekiri urban area manufacturing Korikiri, Odisha Taku, 1500 billion. Muto 2040 Nati, 2036 more be chance like. So 2030 so urbanization, please note down, urbanization as the engine of growth. And in this process, he is trying to follow what? The Lewis model, the Chinese model. Please note down. It is a lekhi कि चाहे चाइना को कहना हमें सब नुआ कथा भाभी कि हमें हम चिंता धारा गुड़ा आसला सब मोर चिंता आसला भगवान जगन्नाथ मते बुद्धि देले बुद्धिटा आपन को दोचे से बुद्धिटा लुइस आर्थर लुइस देखला बुझले. Anyway, please note down, this is very important, extremely important कि ध्यान दे again. The total investment required up to 2047, please note down, the total investment required is around 100 lakh crores. 100 lakh koti टंका cumulative investment about 2047 पर्यंत. बुझले तो? Now this is very important. Now this is based on a presumption that the investment will come from the private sector. Please note of this. What is the growth model Dr. Majhi is taking? Dr. Majhi और Dr. Modi करा मॉडल टा टिके सुनो. आमे 100 लाख कोटी टंका माने जी डॉक्यूमेंट टा करिची प्रभाकर साहू से मोर माने बहुत क्लोज. मु ताको फोन करी से फोटो पठेतला मते फेसबुक रे. मु कहली अरे प्रभाकर ए 1500 टा 150 का सर आपण एमिति कहयो तो फोन धरे ने आपण मु आ कहली की बुद्धि सब देइछ सब. Now please remember, all this should be done on a PPP mode. Please note down, it will be done in a public-private model.
सेतरे किए सरकार केते करछि 33%। आ प्राइवेट सेक्टर केते आला से कॉल 2036 रे प्राइवेट सेक्टर कॉलेनी मु कोनटे करबी मोर तो शेयर थिला 33% सर तो बुझुछु करू तो कितनी सुंदर भाव से जाल गोटे लगे 33% होची सरकार ना प्लीज रिमेंबर इन इंडिया पीपीपी रे हमर कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज अराउंड 30%। प्लीज नोट डाउन ऑल इंडिया हमर जो रोड फोर जते सब होईची एयरपोर्ट जते सब होईची प्लीज नोट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज अराउंड 30%। 70% निर्मला सीतारामन दोची डॉक्टर माझी कहते मुझे उल्टे देवी मुझे उल्टे देवी से मैडम टी भाभी पारना ठीक से 30-70 को मुझे 70-30 कर तो बुझी पार्छ ना नहीं माने कौन सब भाभी से डॉक्टर बुझी पार्छ तो कथा सो व्हाइल इट इज अ गुड आइडिया दैट अर्बनाइजेशन हबो बुझले तो नाउ केते जॉब हबो प्लीज नोट डाउन व्हाट वुड बी द जॉब क्रिएटेड 5 लाख जॉब्स तो मैंने पार्टी करियो सर जॉब पर दोनांती अपन 15 लाख टका ट्रांसफर कलेनी जॉब देलेनी अपन 5 लाख जॉब तुम करिया 5 लाख जॉब लेके जाओ कोटी को देबो टेक्सटाइल फूड प्रोसेसिंग आईटी आईटीएस एंड मैन्युफैक्चरिंग हब ओडिशा हबो मैन्युफैक्चरिंग हब ओडिशा हबो गुजरात मोदी कहरा ता कह जे ओडिशा हबो गुजरात ता कान रे फुकी कहरा जे ओडिशा हबो गुजरात बुझे कि मोदी आसन तो से कहले कहबो जे ओडिशा हबो गुजरात मैन्युफैक्चरिंग हब ना मैन्युफैक्चरिंग केते खर्च प्लीज नोट डाउन $287 बिलियन 287 गवर्नमेंट केते खर्च करियो 30 बिलियन तो देखु तो नहीं वो कथा एरा तो डॉक्यूमेंट रो कहूची मोर ताको आर्टिकल ता पर लिखिबी माने माने एमिति कांदिबे सब 30 बिलियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हला 31 बिलियन गवर्नमेंट के 3 बिलियन सोशल सेक्टर 71 बिलियन गवर्नमेंट खर्च करियो 15 की 20 बिलियन बट द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू से इज व्हाइल दिस इज अ लॉजिकल ऑब्जेक्टिव प्लीज नोट डाउन इट्स अ लॉजिकल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन करिवा but the funding that is being envisaged seems to be unrealistic माने प्राइवेट सेक्टर हम ओडिसा को प्राइवेट सेक्टर आसिकरी देखो जी इन्वेस्टमेंट करूची से ऑल्टरनेटिव देखियो से ओडिसा आसीबो कि गुजरात आसीबो तो कहला से ओडिसा आसीबो कि महाराष्ट्र आसीबो while certain states are doing very well तगर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इज वेरी गुड प्लीज नोट डाउन इन्वेस्टमेंट ओडिया गुडा का निहाती अलसुआ तमाने सब अलसुआ नंबर 1 हार्ड वर्किंग रे सा तमिलियन गुडा को लागी कि गुजराटीज महाराष्ट्रियंस so that is why it has become एगुडा को सब केरलाइट्स केज बेली बेंगल जमा जिबेली माने पूछो तो ओडिसा होची बेंगल रो सानो भाई से सारा भात खाइबा हमें पखाल खाइ कि सोया गत लोक हमें सब बुझो तो so this is my first point. Now let us look at the agriculture sector. Agriculture sector कौन करिवा हमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करिवा ए लोग को सब नै कि प्रोडक्टिविटी सब ट्रैक्टर ट्रैक्टर चले कि सब माने एकदम बढ़िया एकदम काकुड़ी फाकुड़ी हबो माने मका हबो सब बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़िया ना प्लीज अच्छा तापर टूरिज्म डेस्टिनेशन से इको टूरिज्म प्लीज नोट डाउन इको टूरिज्म हैज बीन अ सक्सेसफुल मॉडल इन ओडिशा एटा गोटे डॉक्टर माझी हमको कहले मोदी को डॉक्टर मोदी को कहले सर हमर बहुत इको टूरिज्म अछि आप केबे नेक्स्ट टाइम आसले ते कोणार्क जाय कि जिबे कि से टेंट भीतर पसबे कि सर भल लागिबो आपको भल लागिबो सो बहुत बढ़िया बट लेट मी टेल यू द इको टूरिज्म इज अ वेरी सक्सेसफुल इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा बहुत बढ़िया मुझे इको टूरिज्म में जाई छु बहुत बढ़िया प्लीज नोट डाउन ए जो प्लीज नोट डाउन अर्बनाइजेशन हबो तार अर्बन प्लानिंग कोन हबो प्लीज नोट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट अगेन वेरी वेरी इंपोर्टेंट एथरे प्लीज नोट डाउन जे दे ट्राइंग टू डेवलप Cuttack, Bhubaneswar and Jharsuguda. Please note down. Cuttack, Bhubaneswar, Puri and Jharsuguda. CBPJ. 8 house 8 ho corridor. माने तेलिया मुंडरे तेल बुझो तो किंतु बरगड़
ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡା ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଆହୁରି ସିଟ୍ ହବ ବୁଝିଲ ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ମିଳିବନି ଝାରସୁଗୁଡା ବରଗଡ଼ and ସମ୍ବଲପୁର they have left out the most underdeveloped part, the tribal districts. Please note down this one of the biggest shortcoming of this Viksit Odisha is Dr. Majhi has forgotten the KVP areas. तुम भावो कि वो यार बने कितने विडंबना भावो तो जी की ट्राइबल लीडर सी कोनी कॉरिडोर करवा कोरापुट कलाहांडी एवडा हाँ मलकानगिरी से कॉरिडोर हबनी कॉरिडोर हो बुझो तो ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हबो बेसिक एमिनिटीज टू रीच मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ये जो टोका दबा टिके हमें तंगु दबा promote women empowerment and development. So what are the two major things? Please note down. What are the two major things? Urbanization or urban planning. Manati, all of you will become officers. Please remember, the thrust of the government is roibo out the pandaso to roibo. Ye hala urban planning or urbanization as well. And say that तुम्हें प्राइवेट सेक्टर संगे दारू पी कहो साथी पैसे को दो ना सरकार में पैसे नहीं तो लगा दो पैसे नहीं लगा दो ना तो बुझो तो so therefore this is how the whole thing is envisaged. So we'll go to the last कौन हबो सब देखो ठीक है अच्छा incidentally please note down in Viksit Bharat these kind of targets have not been given by मोदी बाहर तलाक लोक ना रहो बांस ना रहो बांसुरी तब से ना कोई ताको धरिबो तमे किंतु ये माझी कहले सर मु पूरा टारगेट दे जे टारगेट अनुसार सब काम हो हैं टारगेट मु देबी कौन टारगेट देबी पर कैपिटा इनकम प्लीज नोट डाउन हां प्रथम वाला जीडीपी एटी ए पटो तेरस कर एटा गोटा फोटो नियर दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड जी सर 100 बिलियन रु मु 1500 बिलियन कर 15 गुणा 47 रे सर आप जो समाधि ऊपर जाकि मु कहबी सर मोदी सर थिबी क्या से सदी सर मु देखंतु 1.5 ट्रिलियन पर कैपिटा इनकम बर्तन केते अछि प्लीज नोट डाउन 1.8 लाख 1.8 लाख माने 12000 टंका मास 12000 टंका में केते कहियो और तुम भाभी बात कौन हो सिचुएशन 32 लाख 32 lakhs. Please note down. This is very important. There is a shift in the sectoral priority. Please note down. There is a shift in sectoral priority. Share of agriculture, please note down, will come down from 29 to 18. Please note down. It is both important. मजार टिके बेसिक डाटा देखा चेष्टा कर 29% रु 18%. अर्बनाइजेशन बर्तन केते अछि 70 केते हबो सबु शहर रे तमान सब रहबो सबु शहर रे secondary sector तो share of secondary sector will increase, share of service sector will increase. Please note down, there will be a sectoral shift. Please note, there will be a sectoral shift from primary to secondary to tertiary sector. Please note down, there will be a shift from where? Primary to secondary to the tertiary sector. एटा होची पूरा मेजर शिफ्ट. तापरे एमएमआर टा केते हबो एमएमआर टा केते हबो 100 टा 15 हे 15 हे 119 टा 15 हे. Malnutrition among children will become 5. आउ एमएमआर एरा होची बुझो तो एटा होची मेन कथा. तेणु कौन एसएन मिश्र कौन समरी टिके पढ़ी दियो तब तुम घर को जीव सब व्हाट आर द चैलेंजेस एनविसेज्ड. प्रथम कथा आई फील दैट द टारगेट्स आर एक्सट्रीमली एम्बिशियस. ओके, नाउ इट इज गुड टू हैव गुड टारगेट्स बट यू शुड नॉट हैव अनरियलिस्टिक टारगेट. एटा पाई प्लीज नोट डाउन
India, Odisha must grow at 15%. Please note down. 15% जदि ग्रोथ हबो ताहाल जांकरी एमिति जंप तुमे मारि परिबो 15% तम संबार बहुत बहुत मजा करिवो तहसीलदार बहुत बढ़िया पैसा पत्र कमेबो बुझले कि नाउ फंडिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत पैसा पत्र अछि नै आज आ परिश्रम करो बढ़िया कि हबो एकदम दूध घिया एकदम बहुत बढ़िया हबो 67% कॉर्पोरेट सेक्टर पाइबो तमरो काम हला कॉर्पोरेट सेक्टर को कहिगिरी सटी पैसा लगा दो ना सटी लगा दो कोड़ा looks unrealistic कारण मैं तो कहली PPP is now 70-30 please note down in Viksit Bharat the model is 50-50 please note down in Viksit Bharat what is the percentage 50-50 good day biscuit 50-50 माजिर ना सर गुड डे बिस्किट ना 70 क्रीम बिस्किट बढ़िया क्रीम बिस्किट तो मुझे फर्स्ट क्लास क्रीम बिस्किट तापरे आउ गोटे बड़ दुख होची जे वी आर ओनली इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग ग्रोथ पॉकेट्स प्लीज नोट डाउन वी आर इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग ग्रोथ पॉकेट तेलिया मुंडरे तेल ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को हमें in this whole plan there is no emphasis on improving the tribal districts okay our main issue is child nutrition housing sanitation cooking fuel they are serious challenges so they should try to address these challenges mane Viksit Odisha please note down Viksit Odisha will depend on developed Odisha which is developed in terms of human capability, in terms of quality education, in terms of good housing. Are you all getting me? So these are the challenges and our effort should be in place of freebies. Freebies जोड़ा में दोचे कौन करचे कालिया करचे आउट कौन करचे बे जो सुभद्रा करचे ये सब freebies. एरा खाली दारू पी करी नष्ट करी पैसा खाली नष्ट करचंती so freebies in place of freebies long term human employment please note down तो ध्यान दीजिए long term human development and how to improve employability please note down how do you improve employability ता माने तमरा proper skill set रहिले ताहाल जे कि से employable ही परि बुझि परलो तेनु एमती गोटे कथा सब मत डाकी दूरदर्शन रे आपरे कहया पे सेट डायरेक्टर का सर गोटे हाथ जोड़ी सर बेसी गाड़ी देवेनि आपण आ मु कहल नाइ मु एमती कहूची नाइ सर एंता सो मु जीबीटा कहबी ताको सो बुझी पड़छ तो बट आई हैव माने द डायरेक्शन नाउ वन इशू बेसिकली दैट इज कमिंग इज इट में अर्बनाइजेशन करूचे देयर आर टू व्यू पॉइंट्स प्लीज नोट डाउन देयर आर मेनी पीपल हु बिलीव that we should not follow the Chinese model of shifting people from rural areas to urban areas. On the other hand, they believe that many people believe that we should not shift people from rural areas to urban areas. Okay. What instead we should do is how to improve non-farm employment. ध्यान देके सुनो एटा non-farm employment. हमर जो गांव अछि गांव रे 55% अछि farm employment. Please note down. गांव रे जो 70% जो employment होछि 55% अछि on agriculture, on farm employment. Either they are farmers or they are workers. बाकी जो 45% हला नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट प्लीज नोट डाउन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट से होची स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री सेगुडा कंडीशन आहुरी खराब नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इज एन बुझी पड़छ तो फार्म नॉन फार्म सो जेमिति जो पंजाब रे व्हाट दे हैव डन दे आर गोइंग फॉर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्लीज नोट डाउन दे आर गोइंग फॉर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एग्रो प्रोसेस इंडस्ट्री ले कौन हबो ना तमे जो एप्पल हला सीट नॉन फार्म सेक्टर रे इंडस्ट्री हेकरी
सेठी जाम बनला. Are you all getting me? Are you all getting me? एते लोक नहीं करी कोठी से जगह पड़ी जे तमे से किट हेची जे तमे 50 500 पिला को पोसे दबो. अरे एते खाली जगह अच्छे अर्बन एरिया रे जगह तमर अच्छी गां रे अच्छे ना. So you try to, so many people believe like me that we should not, can I come from a village? I very strongly believe जे गां को माने many people गोटा महादेवन अच्छी कौन ताने जो सिनेमा एक्टिंग करे नी अरे अरे उटा थिला बा 3 इडियट्स नथला ते सब है माधवन तार उटा अच्छी बहुत बढ़िया देखियो YouTube पे अच्छी से भला आज के लिए एक्टिंग करछ माधवन. स्मार्ट विलेज इज द डेट ऑफ इंडिया. स्मार्ट विलेज हार्वर्ड रे से उटा देछि बहुत बढ़िया. इट्स अ वेरी गुड स्पीच. सो दे आर जो टेड टॉक रे तो देखियो टेड टॉक माधवन देखियो वंडरफुल टॉक सेतरे कहूचे हमें स्मार्ट सिटी कहीं कहूचे त स्मार्ट विलेज कर से कोथरे सिनेमा थिला मते के कहले टिके माधवन बहुत ओल्ड फिल्म में कोथ थिला कहलो 3 इडियट्स रे थिला से 3 इडियट्स थिला एबे भी भलो सिनेमा करछि एबे एगोटे कोन सिनेमा अछि कहलो नेटफ्लिक्स से देखुछि आप जैसे देखो तो मतलब आप जैसे बढ़िया सिनेमाटा वेरी नाइस मूवी आप जैसे हो. सो माधवन से कोची दैट वी शुड ट्राई टू डेवलप स्मार्ट विलेजेस एंड नॉट स्मार्ट सिटीज. आई वेरी स्ट्रांगली सब्सक्राइब टू दिस व्यूज. सो बुझी गलो तुम सब. सो डायरेक्शन हैज चेंज. सो that's about all and we will meet on 1st September again. Okay. So टिके पढ़ी दबो तुम हिंदू रे गोटे एडिटोरियल बाहर से आजी on the FTA trade. But basically what I say that आमे उडा सब unhealthy food हेले हमर ताको टे रेगुलेट करे पड़ियो नहले एडा खाली सब दारू फर पीबे सब चॉकलेट खाली खाइबे बिस्किट खाइबे मोटा आवरी हेबे unhealthy हेबे हैला. Is that clear to all of you? ठीक है. Thank you. Bye. सर हेलो सर सर टिके मॉडर्न वेलफेयर ऊपर टिके नेक्स्ट क्लास रे कहिबे सर जोटा चेंजिंग करछ वर्ल्ड रो कोनटा कहलो मॉडर्न वेलफेयर मॉडर्न वारफेयर जुदो यस सर. हां ठीक है. यस सर. डायमेंशन चेंज होछ सर. ठीक है जुदो करिया देखियो तो सब पता कोन थैंक यू. जे सारा एयरक्राफ्ट किए जितको फोन करियो कोन हो एयरक्राफ्ट किए मून किए खाली